एक ऐसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं which accepts and rejects both grand narratives. एक ऐसी थ्योरी which talks something different, जो ये नहीं कहती कि institutions are important, it is a society who shapes the individual. ये नहीं कहती कि no, it is the individual interactions who create patterns of behavior and ultimately shapes the society. Postmodernism, it argues that these are two limited ways of thinking or living in modern era. Postmodern theory explains the way in which the people after 1980s started living. As 1980s and onwards emerged, तो हुआ ये कि people got more choices. लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से निकल के सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ आ गए, लीजर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एंड देन इन आई वुड से welcome back students. In the previous lectures we did structuralism and then we did interactionism, basically two grand narratives of sociology. आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, एक ऐसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं which I would say accepts and rejects both grand narratives, right? एक ऐसी theory which talks something different और जो कि structure को और social action के को जहन में नहीं रखती, जो ये नहीं कहती कि institutions are important, it is a society who shapes the individual. ये नहीं कहती कि no, it is the individual interactions who create patterns of behavior and ultimately shapes the society. No. बल्कि ये theory, postmodernism, it argues that these are two limited ways of thinking or living in modern era, which is technically before, I would say, 1990s to be exact, right? ये दो ऐसे तरीके हैं देखने के सोशल सिस्टम को कि जिनके अंदर और ऐसे जीने के तरीके हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेड चॉइसेस की वजह से लोग मॉडर्न एरा में अडॉप्ट कर रहे थे, राइट? एंड विद द डॉन ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा और पोस्ट ट्रूथ एरा, विच एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द 21st सेंचुरी, बट टू बी एग्जैक्ट अगर हम इसको देखें तो 1980s के बाद हमें पोस्ट मॉडर्न एरा के ट्रेसेस मिलना शुरू हो जाते हैं और 1990s आफ्टरवर्ड्स आप इसकी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ, सो इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो फ्री मार्केट्स या प्लान इकोनॉमी से बदल के मिक्स्ड इकोनॉमीज की तरफ आते हैं, जहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म होते हैं इन अ नटशेल, राइट? which actually have a greater impact on the way people live, people think, and people assign value to things. So postmodernism or postmodern theory explains the way in which the people after 1980s started living. Industrial revolution के बाद, which is called modern era. So industrial revolution में, which is after 1850s से 1980s तक का जो एरा है, इसको हम मॉडर्न एरा कहते हैं. इट वाज बोर्न बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे, इट वाज मोर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर गुड्स बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा और पीपल वर एक्चुअली आइडेंटिफाइड or they have a social identity based on their economic living, right? So as 1980s and onwards emerged, तो हुआ ये कि people got more choices. लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से निकल के सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ आ गए, लीजर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, एंड देन इन आई वुड से in late 1990s, 98, 99, with the emergence of technology, digital technology, so everything got changed. Nation state से आप निकल के globalization की तरफ चले गए, right? तो post
मॉडर्निज्म यही बात करता है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी यही बात करती है कि टुडे दैट वी आर लिविंग इन फ्रॉम 1980s onwards is somewhat where you should not be bound by the ways you live. It is your choice. It is an individual's choice the way they want to live, the point of view that they see the reality is equally values as the way the other person sees. So every individual's point of view, every individual's way of living, every individual's thinking or understanding, or I would say making sense of reality is equivalent to others, right? यहाँ पर इस आप नोट करेंगे, आप कलेक्टिविज्म से निकल के ट्रेडिशंस, कस्टम्स, नेशनहुड, कम्युनिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग से निकलकर आप किधर आ जाते हैं? यू लैंड इनटू इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट, and I would say free will, the way you want to live, the way you perceive or assign value to things. Whatever you think reality is must be equally valued as others thinks the reality is, in a nutshell, right? And you're allowed to abide by or live by the rules or ways you want to live, right? So it's a strong supporter of individualism, atomism, okay? And it rejects the idea of collectivism. It rejects the both grand or meta narratives. It rejects the idea of nation state concepts. It rejects the idea of living within a culture which is territorially defined, right? It rejects the idea of choosing a specific career associated with industry, especially manufacturing industry, rather than working on things or maybe doing remote jobs, or the jobs whatever you want to do you can pursue your career with, right? So let's begin with the end in mind. So postmodernism, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, number one, it started in late 20th century. It rejects both meta narratives, which is interactionism and structuralism. It rejects both narratives equally, and at the same time it accepts both ideas as well, or both theories, both doctrines, because it is in the end individuals will, the way they want to live, right? So but it's not a hard and fast rule कि आप ऐसे ही जिएंगे. इसके अलावा आप देखते हैं कि जब पोस्ट मॉडर्निज्म के की फीचर्स की बात करते हैं तो पहला आपको जो की फीचर मिलता है वो मेटा नैरेटिव्स वर्सेस रिलेटिविज्म. No, meta-narratives are the two grand narratives that I have been speaking of since we have started these classes, जो कि core है sociology का, structuralism and interactionism, right? So, structuralism and interactionism are two ways or two doctrines or two ideologies, two perspectives to see the society, to see the social system, right? Whereas relativism is each individual's point of view of seeing the society, of seeing the reality, of making sense of reality is equally important. It is valued equally. Imagine in your mind, if you are standing at the top of a mountain and you can climb the mountain from either direction. आप राइट से जाएं, आप लेफ्ट से जाएं, आप फ्रंट से जाएं, आप बैक से जाएं, आप जैसे मर्जी जाएं, आपके लिए जो टॉप पर है वो रियलिटी जो है वो इट्स एट द पीक ऑफ द माउंटेन, राइट? सो आप जैसे मर्जी ऊपर ट्रैवल करके जाएं, यू विल इन द एंड रीच रियलिटी, राइट? सो ये रिलेटिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, राइट? सो ईच इंडिविजुअल, अगर जो इंटरेक्शनिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों पर्सपेक्टिव्स को होल्ड करके सोशल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में आर्टिकुलेट करता है, इट्स फाइन. अगर कोई समझता है कि नो, इंटरेक्शनिज्म इज द वे ऑफ हाउ सोशल सिस्टम्स आर मेड, फाइन. सो व्हाटएवर यू थिंक, राइट? नेक्स्ट, these post-modern societies that we are living in now, which are see,
let me give you a timeline. So from 1815 onwards to 1980s, we have modern era. From 1980s onwards to 2012, we have postmodern era, and from 2012 onwards till now, we have meta-modern era. So as of now, we are living in meta-modern era, but we also have the traces of postmodern era as well. So postmodern era के अंदर consumerism, right? Conspicuous consumerism as well, अब हम इसको कभी कभी बोलते हैं, जिसके अंदर लोग compulsive buying, they just want to consume products, just want to the more they consume, the more it adds to their achieved status. Why would rich people or certain people will buy so many expensive clothes, watches, perfumes और जितनी भी उनके साथ related belongings हैं? क्यों? Because it's called in sociology conspicuous consumerism, because this is the way they want to be defined. And obviously conspicuous consumerism and excessive, I would say compulsive consumerism is a discipline of it's a part of psychology, as well as you can see it has the traces of materialism as well, which we now can clearly see, right? Next, manufacturing economies versus service economies. So modern era में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का अफेक्ट आया था अर्बन सोसाइटी से, फैक्ट्रीज इंस्टॉल्ड एवरीवेयर, इंडस्ट्री लगी थी, वहाँ पर लेबर वाज टेकन एज स्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट? बट इन पोस्ट मॉडर्न एरा the economies, the economic systems are more I would say inclined towards production of services. Service industry is booming. For example, we having tourism, leisure, different types of, I would say, things that are associated with service rather than production of goods. इसी तरीके से we have done meta narratives, we have done relativism, we have done manufacturing economies, done consumerism. Last but not the least, but I think it's second last, collectivism versus individualism. So collectivism is when you collectivism is a philosophical doctrine where you do not take selfish, self-interested decisions, जैसा कि एडम स्मिथ ने सेल्फ इंटरेस्ट को डिफाइन किया है, born by individual benefits only, right? So you आपके पास जो modern societies हैं, they were a little collectivist. In modern societies you had a sense of belonging to a tradition, to a nation state, right? Whereas now you identify as your own, yourself. You don't need any territory to be defined, because with the emergence of digital technology and technological revolution, which is actually, to be very exact, why we call meta-modern era is because after 2012 we had this technological revolution, right? जिसकी वजह से globalization और culture जो है वो मल्टी कल्चर में बदल गया, नेशन स्टेट ग्लोबलाइजेशन में बदल गई, और कोई ख़ास किस्म के नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन नहीं रहे. सो द टेरिटोरियल लाइंस बिटवीन द कंट्रीज़ और नेशन स्टेट्स वर ब्लर्ड, राइट? आज आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आज आप मुख्तलिफ दुनिया के सोप्स देखते हैं, कोरियन सॉन्ग सुनते हैं, इज़ बिकॉज कुछ लोग जापानीज़ जो है वो सीजन्स देखते हैं, दे ईट टर्किश फूड, right? Is because there is no defined culture now. Rather, we live in an era where we have multicultural, globalized identities rather than individual identities, right? So, guys, postmodernism, अगर मैं आपको इसको सबको कंक्लूड करके बताऊं तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है. पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निस्ट theory emerges after 1980s, and it rejects
both grand narratives or both limited ways of living, such as structuralism or interactionism, since in the modern era they have limited number of choices and a very defined economic system. And that is why people used to live by either structuralist view or interactionist view. But as of today, you are free and you have all the options and choices to live the way you want. Thank you so much.